पहले तो आई मस्ट अप्रिशिएट कि आपने ये एफर्ट किया है और आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स जिसमें आपने इस तरह का टॉपिक दिया है कि स्टूडेंट्स को अपने फ्यूचर और अपने वेटरनरी प्रोफेशन के स्कोप और एक्सपेक्टेशंस का पता हो. So I'm going to start a little presentation for all of you. The presentation is about Doctor of Veterinary Medicine, scope and expectations. जैसा कि everybody, all of you know that it is a very difficult profession, and it can offer different career paths, and all these career paths work toward the betterment of health and well-being of animals. And this is actually the whole role and the goal of a veterinarian, to work for the betterment of health and well-being of animals, and it is related with the welfare of all the animals. But if we go into detail, this profession is not about animals only. It is also concerning the problems and well-being of community and people as well. So we call it a calling profession. A profession is called calling when you are attracted to a profession, and the profession is actually helping you out to work for the betterment of people. So it is a calling profession, rewarding profession. You are not only gaining money from it, but you are also gaining a lot of respect from this profession. It is interesting because you are not only working with large animals, but you are working with zoo and wild animals, with the pets, and even in the fisheries sector, you are working with the marine animals as well. It is a diverse occupation, and in the slides to come, I will just brief on the versatility and diversity of this profession. It is difficult, it is challenging, and it is filled with both happy and sad moments, stressful situations, mistakes, failures, but there are a lot of pleasant successes as well. So after a very harsh training and education, you reach the point where you start working by your own. And when you face a problem in your professional life, you will be there alone to deal with that problem and to solve the problem that is faced by the community. So, in a nutshell, it is a very rewarding profession, and we are proud, all of us are proud to be veterinarians. But this profession has also many demands in it. So, मैं थोड़ा सा आपको brief कर लूँ कि how important your profession is. It is a rewarding profession, interesting profession. It is calling and diverse occupation. So if I say calling profession is actually the profession that help you to work for the community and well-being of people. That जैसे हम MBBS में doctors का profession is a calling profession. Veterinarians are calling professionals. Calling doesn't mean कि कोई आपको call करता है और आप उसका जाके case attend करते हैं. ये एक एडजेक्टिव है जिसमें हम उन तमाम प्रोफेशंस को लेते हैं जिसमें आप you help people actually. So your profession is a calling profession. It is interesting profession because you are working with the diversity of animals, the diversity of species in animals. It is of course a rewarding profession because you gain a lot from this profession, not only knowledge and money, but also a lot of respect. It is a diverse and versatile occupation, and there are many moments, both happy and sad, when you are learning and when you are in this profession, because it is very difficult, it is challenging. Sometimes there are stressful situations that you deal with while you are working with the animals and community, but there are many times that you will face pleasant successes, and that is actually the most important reward that you get from this profession. After hard training and education, you reach to the point where you start working on your own, and you start solving the problem of people. uh, Professional demands from vet, these are very important because first demand is the detailed knowledge.
سو آپ میں سے جن بھی اسٹوڈنٹس کو، لڑکوں لڑکیوں کو، اگر کتابوں سے کوئی شغف نہیں ہے اور یو آر ناٹ انٹرسٹڈ ان کنٹینیوس ایجوکیشن، then I must say that you should not join this profession, because this profession demands continuous education. It demands detailed knowledge. You need to go back again to your books. You need to go back to your education. You not need to go back to revive your knowledge. Even very skillful and very experienced professionals, they update their knowledge. Second important demand is skills for making quick decisions, because, and this deals with the leadership skills, because there are times when you are dealing with the situation and you need to make a very quick decision, and you must have nerves also to implement that decision as well. So this is another demand of this profession. Work versus private life. It means it is actually a demand. Work versus private life is that the profession demands a veterinarian to work, but at the same time give time to his family, his or her family. Because if you are continuously working, you are always in a stressful condition. So veterinarians should not be stressed. تو ہمارا پروفیشن ہمیں یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم کام کریں، بٹ وی مسٹ گیو ample time to our families, and we must spend time with the families so that we are out of the stresses. Because ہم جس کام میں ہیں، ہم جن سچویشنز میں ہمیں واسطہ پڑتے ہیں اینیمل سے اور کمیونٹی سے، اس میں ہمارا مائنڈ اسٹریس فری ہونا چاہیے. So to becoming stress free, we must give time to our families as well. This is a demand. It's not a layer activity, but it is actually a demand. ہم نے بہت سے ویٹنیرینز دیکھے ہیں جو بہت ورکوہولک ہیں، بہت کام کرتے ہیں، اور وہ اپنا ٹائم زیادہ تر اپنے کلینکس کے اوپر یا اپنی پروفیشنل لائف میں گزارتے ہیں، اور پرائیویٹلی اپنی لائف میں اپنی فیملیز کو وہ ٹائم نہیں دیتے. بٹ اپیرنٹلی وہ یہ لگتا ہے کہ دے آر ویری سکسیزفل، بٹ دے آر اسٹریسڈ آؤٹ پیپل. سو it is a demand. Healthy living. Profession demands you to be both physically and psychologically fit. For being physically fit, you must be a good sportsman. You must be having some exercises, have good meal, have good balanced diet, and have a good sleep. So these are all important for your physical health. And psychologically, as I mentioned before, a veterinarian should not be stressed out. If a veterinarian is stressed out, he will not be able to deal with all of his cases and deal with the public at the same time. So to become a successful veterinarian, and as the profession demands, you must be living a healthy living. A veterinarian must be passionate and compassionate, not only with the animals, but also with the owners. Perfect manual dexterity. Your arms and your hands are your weapons, but of course after your brain. سو آپ کے جو ہم کہتے ہیں کہ ہینڈز آن پریکٹس ہے، اور آپ کی جو فزیکل اسٹرینتھ ہے، اور آپ کی وداؤٹ اینی گیجٹس بھی اگر کسی جگہ کے اوپر آپ کو اینیمل کو ریسٹرین کرنا پڑے، تو آپ کو وہ تمام پروسیجرز، اور ان تمام پروسیجرز کے علاوہ یو مسٹ ہیو انف اسٹرینتھ ٹو ڈیل ود دا اینیملز بوتھ لارج اینڈ اسمال. کمیونیکیشن اسکل ویری امپورٹنٹ. کمیونیکیشن اسکلز میں اسپیکنگ آپ نے کہا امپورٹنٹ، بٹ فار اے کلینیشین یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک اچھے کلینیشین کے لیے لسننگ از مور امپورٹنٹ. بیکاز جب تک آپ اپنے کلائنٹ کو لسن نہیں کریں گے، آپ ہسٹری کے لیے اس کو لسن نہیں کریں گے یا اس کے پرابلمس کو لسن نہیں کریں گے، تو آپ اس کو اچھی طرح سے کلائنٹ سیٹسفیکشن میں نہیں جائیں گے. یعنی کلائنٹ کیئر کے لیے کلائنٹ کیئر بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنا ٹریٹمنٹ آف اینیمل. تو کمیونیکیشن اسکلز میں آپ کی اسپیکنگ پر آپ کی لسننگ موسٹ امپورٹنٹ از دا اسکل. لسننگ کا بھی ایک اسکل ہوتا ہے نا، کہ آپ بعض اوقات ہمیں بہت سے لوگوں میں عادت ہوتی ہے کہ ہم کسی کی بات کو سنتے نہیں ہیں. So to listen to other people is a skill, اور یہ اسکل ایک کلینیشین میں بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے، یہ بہت زیادہ ضرورت ہے اسکل کی. دین آر یور بزنس اسکل. آف کورس اگر آپ نے کوئی اپنا بزنس اسٹارٹ کرنا ہے تو آپ کو
You must be good at managing finance, follow market trends और adopt your work accordingly. आपने उसी तरह से चलना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए. तो ये वो तमाम 8 प्रोफेशनल डिमांड्स हैं जो कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट और फॉर अ क्लिनिशियन, फॉर अ वेटनेरियन, wheresoever a veterinarian is working it, they are all very important because आपका प्रोफेशन दैट डिमांड यू टू बी वेरी पेशेंट. तो आपको बहुत पेशेंस दिखानी है. यू आर डीलिंग विद द एनिमल्स. इसके अलावा भी अब आप ये तो वो डॉक्यूमेंटेड 8 डिमांड्स हैं जो कि हमें हर जगह ग्लोबली हर जगह पे नजर आती हैं. इसके अलावा भी आप सोचें कि एज अ वेटनेरियन आपका प्रोफेशन आपसे क्या डिमांड करता है. सो अपनी पेशेंस जो आपका लेवल है, अगर वो आपका पेशेंस लेवल कम है और अगर आप एंजाइटी में बहुत जल्दी आ जाते हैं तो आप कभी भी अच्छे वेटनेरियन नहीं बन सकेंगे. नेक्स्ट इज अनलॉक अपॉर्चुनिटीज, जो कि बात ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिसमें आप भी इंटरेस्टेड होंगे बिकॉज योर प्रोफेशन इज रिक्वायरिंग क्वालिफाइड वेट्स फॉर एफिशिएंट फार्मिंग एंड टू बूस्ट द प्रोडक्टिविटी. सो एफिशिएंट फार्मिंग और बूस्ट प्रोडक्टिविटी को मैंने ग्रीन किस लिए किया है, ये वो दोनों फैक्टर्स हैं जो कि आपको ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि यू आर नॉट जस्ट अ वेट. आपने सिर्फ एनिमल्स का ट्रीटमेंट नहीं करना, बट एफिशिएंट फार्मिंग के लिए और प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए ये तमाम सेक्टर्स में, लाइफ स्टॉक में, फिशरीज में और पोल्ट्री में किन किन सब्जेक्ट्स पे आपको अबूर चाहिए, वो तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं आपके लिए फॉर फुलफिलिंग योर डिग्री प्रोग्राम. सो आप प्रोडक्शन भी पढ़ते हैं, आप इसके अलावा एनिमल न्यूट्रिशन भी पढ़ते हैं, आप डेयरी का भी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं. सो वो तमाम सब्जेक्ट्स आपके लिए क्यों ज़रूरी है, बिकॉज उन्हीं सब्जेक्ट्स को लेके प्लस आपकी जो क्लिनिक्स की जो नॉलेज है उसे लेके आप अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आपकी जो वेटनेरियन के लिए जो पाथ्स हैं, देर आर डिफरेंट पाथ्स. तो आपको एरो के नीचे जितनी भी ये बुलेट्स नजर आ रही हैं जिसमें एनिमल हेल्थ इंडस्ट्री है, दिस इज वन ऑफ द पाथ. Animal health industry actually, this involves all those companies who are providing products and services to community as well as to the veterinarians. So जिसमें pharmaceutical industries भी आ जाती हैं. बहुत से वेटनेरियंस एनिमल हेल्थ इंडस्ट्री में काम करते हैं और इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए दे आर प्लेइंग अ लॉट ऑफ रोल्स. जैसे कोई सेल्स में है, कोई मार्केटिंग में है, समबॉडी इज इन रिसर्च, समबॉडी इज एट मैनेजरियल पोजीशन. सो हर एक जो रोल है दैट हैज इट्स ओन डिमांड्स. लेकिन वो जो आपको पहले मैंने 8 जो डिमांड्स बताई हैं, दे आर कॉन्स्टेंटली नीडेड एवरीवेयर. सो एनिमल हेल्थ इंडस्ट्री, इट इज वन ऑफ द पाथ. कंसल्टिंग में क्या है कि यू कैन बिकम कंसल्टेंट, बट हमारे यहाँ पे ये सोच होती है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद हम कंसल्टेंट बनते हैं. बट अगर आपने किसी एक फील्ड में एक्सपर्टीज डेवलप कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने डीवीएम करने के बाद अगर रेडियोलॉजी है या सर्जरी है या आपने कम्युनिकेशन में आप ज़्यादा अपने आप को अच्छा समझते हैं और आप कम्युनिकेशन या मीडिया में चले गए हैं, सो यू कैन बिकम अ कंसल्टेंट. It doesn't require कि you will need to go to a very old age to become a consultant, but this all depends upon your expertise and your time that you are giving to your profession. Then is the management. आजकल दुनिया में कोविड के बाद भी बल्कि इससे पहले भी प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स की पोस्ट आती है और प्रैक्टिसिंग वेट्स की पोस्ट आती है. और ये कोई इतना आपको मुश्किल इसलिए नहीं लगता बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स दैट आर गोइंग ऑन फॉर प्रैक्टिसिंग वेट्स एंड प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स एंड दे आर हाईली पेड जॉब्स. सो मैनेजमेंट में बाज़ औक़ात हमारे यहाँ पे कुछ बच्चे MBA भी करते हैं एंड दैट इज एडिंग मोर फ्लेवर टू योर DVM डिग्री. सो मैनेजमेंट इज अनदर पाथ इन विच यू कैन वर्क. देन आर मिलिट्री सर्विसेज, हमारे यहाँ पे भी बच्चे RVFC में जाते हैं एंड RVFC यू आर डीलिंग विद डॉग्स, यू आर डीलिंग विद फॉर्म्स, यू आर डीलिंग विद इक्वाइंस. सो मिलिट्री सर्विसेज में भी आप एक, दिस इज अनदर पाथ. देन इज मोबाइल प्रैक्टिस. आजकल ज़्यादातर हमारे जो फार्मर्स हैं
हमारी जो फार्मिंग कम्युनिटी है वो एनिमल्स को डिस्प्लेस करने से या एनिमल को डिजीज्ड एनिमल को हॉस्पिटल्स में लाने से ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि सम मोबाइल प्रैक्टिस मस्ट बी देयर. सो एनिमल अगर डिजीज्ड है और उसे हॉस्पिटल लेके जाना है, उसे ट्रैवल कराना है, तो एनिमल मजीद स्ट्रेस में आ जाता है. इसी तरह से क्लाइंट के पास भी इतना टाइम नहीं है और क्लाइंट भी स्ट्रेस में आता है. लिहाजा मोबाइल प्रैक्टिस इज द वन जिसमें आप यू कैन वर्क. दिस इज अनदर पाथ. और इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें आपको आपका जो कम्युनिकेशन है क्लाइंट के साथ ज्यादा बेहतर बन जाता है. यानी इसमें क्लाइंट केयर आप ज्यादा दिखाते हैं और इसमें आपकी मोबाइल प्रैक्टिस में आपकी अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ टाइम क्लाइंट्स बनते हैं और आपकी इनकम भी ज्यादा होती है. रादर देन कि आपको ब्रिक एंड मोटर क्लिनिक में यानी एक जगह के ऊपर आप फिक्स होके बैठ जाएं और आपके एनिमल्स वहां पे आए. इससे बेहतर है कि मोबाइल प्रैक्टिस में इफ यू आर वर्किंग प्राइवेटली यू कैन गो फॉर मोबाइल प्रैक्टिस एज वेल. पब्लिक हेल्थ इज अनदर पाथ. और पब्लिक हेल्थ में ज्यादातर जो वेटनेरियंस काम करते हैं वो उनके पास एक डाइवर्सिटी आ जाती है. जैसे हमारे बाहर के मुल्कों में पब्लिक हेल्थ में जो वेटनेरियंस काम करते हैं वो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे हैं. और नॉट ओनली अब्रॉड बट इन पाकिस्तान एज वेल. हमारे यहाँ पे इन्वायरमेंटल साइंसेज हैं या और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं या हेल्थ के सेक्टर्स हैं जिसमें पब्लिक हेल्थ के एक्सपर्टीज जो वेटनेरियंस हैं दे आर मोर successful as compared to simple MBBS doctors. रिसर्च इज अनदर एरिया. और रिसर्च का एरिया आप यूनिवर्सिटी में जैसे यहाँ पे रिसर्च होती है, बच्चे एमफिल करने के लिए आते हैं. सो यहाँ पे आप अपने रिसर्च का जो अगर आपको एप्टीट्यूड है उसको आप पूरा कर सकते हैं, आप रिसर्च कर सकते हैं एंड स्काई इज द लिमिट. बिकॉज आप डेवलपमेंट ऑफ ब्रीड्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं, आप थीरियो में प्रिजर्वेशन ऑफ जर्म प्लाज्म के ऊपर काम कर सकते हैं, आप डिजीज प्रिवेंशन की स्ट्रेटजीज बना सकते हैं, आप ड्रग डिस्कवरीज कर सकते हैं. बिकॉज आप यू आर वर्किंग विद द सिक एनिमल्स एंड यू आर प्रैक्टिसिंग योर मेडिसिन ऑन दैम. सो रिसर्च भी एक वास्ट एरिया है जिसमें आप काम कर सकते हैं. मुख्तलिफ प्राइवेट कंपनीज के अपनी रिसर्च लैब्स हैं या आप अपनी भी रिसर्च लैब बना सकते हैं इफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन गोइंग फॉर रिसर्च पाथ. टीचिंग इज अनदर पाथ. और टीचिंग से मुराद हरगिज भी ये नहीं है कि आपको जरूर किसी यूनिवर्सिटी में जाके कोई फैकल्टी बनना है. ऑफ कोर्स जो आप में से टॉपर्स हैं दे आर एलिजिबल फॉर दैट. बट बाकी स्टूडेंट्स अगर किसी को टीचिंग का शौक है तो आप कम्युनिटी एजुकेशन की तरफ जा सकते हैं, आप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बना सकते हैं, आप असेसमेंट्स और मॉड्यूल्स बना सकते हैं. सो टीचिंग में भी एक वास्ट एरिया है जो कि जिसमें आप जाके यू कैन अर्न अ लॉट. वेटनरी स्पेशलिटी मेडिसिन जिससे मुराद ये है कि आप अपनी कोई स्पेशलिटी रखते हैं, जैसे इक्वाइन प्रैक्टिशनर्स, जैसे पेट प्रैक्टिशनर्स हैं, जैसे लार्ज एनिमल प्रैक्टिशनर्स हैं, जू एनिमल प्रैक्टिशनर्स हैं, वाइल्ड एनिमल प्रैक्टिशनर्स हैं. सो आप अपनी स्पेशलिटी में भी जाके आपको बहुत सी जॉब्स जहाँ पे पाकिस्तान में भी इवन ऑफर होती हैं. यहाँ पे एक पॉइंट नहीं है जो कि मैं ऐड करूंगी, पब्लिक पॉलिसी. सो पब्लिक पॉलिसी इज अनदर पाथ इन विच यू कैन वर्क. और बहुत से हमारे वेटनेरियंस ऐसे हैं जो आप में से ही CSS की तरफ जाते हैं और बाद में अगर वेटनेरियन भी हो और वो सिविल सर्विसेज में भी हो तो फिर वो वेटनेरियंस के लिए, एनिमल्स के लिए, एनिमल लॉज के ऊपर ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं. और उसमें भी बहुत सी जब आप पब्लिक पॉलिसी के ऊपर काम करते हैं, स्पेशली आप अपनी अगर एमफिल डिग्रीज में जाएं तो पब्लिक पॉलिसी इज अनदर एरिया. और पब्लिक पॉलिसी में आपको बहुत से स्कॉलरशिप्स भी मिलते हैं, आपको फंडिंग्स भी बहुत ज़्यादा मिलती है बिकॉज इसमें अभी भी लोग कम हैं. सो इट इज़ अनदर पाथ. यहाँ पे आपको बहुत सी ऐसी एवेन्यूज मिलते हैं जिसमें आप जा सकते हैं. इन्हीं पाथ्स को लेके आप क्वारंटीन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, आप लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, पाकिस्तान आर्मी में जा सकते हैं एज अ कमीशन ऑफिसर, आप अपना पेट क्लिनिक एस्टेब्लिश कर सकते हैं, डेयरीज हैं, पोल्ट्रीज हैं, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक है, बाकी बैंक्स हैं जिसमें आप एग्रीकल्चर क्रेडिट ऑफिसर के तौर पर जा सकते हैं. आप मुख्तलिफ NGOs जो कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करती हैं जैसे WWF है, इस किस्म की NGOs के साथ आप काम कर सकते हैं. और अगर आप में पोटेंशियल है तो आप मीडिया में भी काम कर सकते हैं बिकॉज दिस इज अनदर अपॉर्चुनिटी जो कि मोस्टली हमारे ग्रेजुएट्स अवेल नहीं करते और वो समझते हैं कि वो मीडिया में काम नहीं कर सकते. बट वेटनेरियंस कैन डू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अगर वो अकॉर्डिंगली अपनी एजुकेशन को लेके चले और मीडिया में काम करें.
اکنامک بینیفٹس ہم یہاں پہ جو ویٹنیرینس ہے دے اسٹارٹ فرام 30,000 to 40,000. اس کے بعد ڈپینڈنگ اپون دا ورک, دا ایفرٹس, دا ٹائم یو آر گیونگ ٹو یور جاب اینڈ دا ایفرٹس یو آر ڈوئنگ اینڈ دا ڈیمانڈز یو آر فلفلنگ فار یور پروفیشن, آپ لاکھوں کما سکتے ہیں. آپ کو کہیں بھی دبئی یا امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آج کل اگر ہم ابراڈ کی بات کریں تو دبئی میں بیکاز ان کا جو اب موٹو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آور فوڈ فرام آور اون فارم. سو وہاں پہ فارمنگ زیادہ ہو رہی ہے, پیٹس وہاں پہ, ہاسپٹلس بہت زیادہ ہیں. سو دیٹ از اندر اپرچونیٹی اف یو وانٹ ٹو گو. اور آپ اگر اپنی پروفیشن کی ڈیمانڈس کو پورا کر رہے ہیں تو یو آر ویری فٹ ٹو گو ابراڈ ایز ویل. یہاں پہ جو آپ اس سلائیڈ میں لسٹ دیکھ رہے ہیں بہت سی ہماری ڈیولپڈ نیشنز کی ہیں جہاں پہ ویٹنیرینس کو اینولی بہت اچھا ہائیلی پیڈ جابس اویلیبل ہیں. اور نٹ شیل میں صرف یہی کہوں گی کہ آپ پاکستان میں کام کریں یا آپ ابراڈ کام کریں, آپ کو اپنے پروفیشن کی ڈیمانڈس کو پورا کرنا ہے. اور وہ ڈیمانڈز آپ کے منیمم ڈیمانڈز میں نے آپ کو جو بتائی ہیں وہ آپ کو ہر وقت اپنے ذہن میں اس لیے رکھنی ہے بیکاز یو وانٹ ٹو بی اے گڈ ویٹنیرین. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے جیسے ویٹنری کی ایجوکیشن بڑھ رہی ہے, پہلے پاکستان میں بالکل چند ایک ادارے تھے جیسے ہمارا کالج آف ویٹنری سائنسز تھا جو بعد میں یواس کی شکل میں 2002 میں اس کو یونیورسٹی کا درجہ دے دیا. بٹ دس از دا اولڈسٹ ویٹنری انسٹیٹیوٹ اور جو 1882 میں بنایا گیا تھا. اس کے بعد پھر ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد ہے اور بہت سے دوسرے ادارے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ بنے ہیں. اور ان کا بننا their existence, very existence shows that there is a rising awareness of the importance of animal sciences in Pakistan as well. اس کے علاوہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشنز بھی ہیں جیسے ایک دو بن گئے ہیں ہمارے پاس. یہ بھی ایک اپرچونیٹی ہے. یو کین آلسو گو فار دیٹ اف یو آر ویری گڈ in managing things and if you are very good practicing manager, so you can go for your own institution as well. اب جو چینج جو شفٹ آئی ہے پوری دنیا میں گلوبلی اینڈ ایون ان پاکستان ایز ویل, وائی دا کلائنٹس آر چوزنگ what type of service do they need. So previously it was a price and sale oriented approach جو میں آپ سب کو کہوں گی کہ ذہن میں رکھیں کہ there were 5 parameters after which a client goes to a vet. Number one is the product. Product are your clinical skills and quality of care. Then is personnel, means to say your communication and the way you treat the animals. Price, how much fee you are taking. Place, where is your premises or your clinic or your hospital. Then which marketing tactics you are using for promotion of your clinic. These were the 5 chosen criteria, and this is a research actually. It was done in Netherlands and it is applicable everywhere globally. So these 5 characteristics were taken and they were surveyed among all the clients, and they came to know that client care approach is mostly preferred. And in client care approach, your communication skill and the way you treat the animal, the way you behave with your client is taken as the number 1 criteria for selecting you. If you are very good vet and you know your subject, you're technically very sound, but you don't know how to communicate with your clients, you can't be a very successful veterinarian. Then comes your clinical skills, your quality of care, then is your place, then is your promotion, and at the end there is price. So everybody, everywhere in the world, wherever you go, your communication skills and the way you behave and you take care of your client is taken as the very important skill. And this is actually a skill that you must have. So just being a competent clinician is not enough. Then another skill is handling the complaint well. So ہمارے جو 7th semester کے students ہیں یا 8th کے یا 9th کے جو students ہیں یا انڈر گریجویٹس ہیں, how well you deal with the unhappy client. This is another skill. اور بہت زیادہ ایکسپیرینس لوگوں کو بھی بعض اوقات اس اسکل میں they don't know how to deal with the unhappy clients. So this is the recipe actually.
Number one is privacy. You discuss the matter whatsoever it is with the client privately. So जब आप बाहर जाते हैं तो बाहर के hospitals में आप एक client consultation room देखते हैं. This room is specially built up for those clients who have any problem with the doctors, with the administration, with the working doctors, or with your support staff. So you can listen to them in that isolated place. Listen to the client, regret if there is any mistake, give reason. If you have some reason, you can give your reason to the customer, and then you can resolve. This is actually the recipe, and all of you who are planning to work with the clients, or who are planning to work in the clinical situation, must keep these 5 points in your mind when you are dealing with the unhappy clients, because with this recipe you can change your unhappy clients to your customers for life. And this is actually the thing that I have also seen. You are dealing with many unhappy clients, and if you deal with them in a strategic manner, then you can make them friends for life. These are the two criteria on which your employer give you some employment. Number one is the technical skill, and number second is the non-technical skill. And this was another study abroad. I've just given a few points. Both of these skills are important. But when it was studied that which one is more effective, then non-technical skills had double weightage as compared to the technical skills. So again, your non-technical skills, your interpersonal skills, your communication skills, your empathy for the client, your ability to work in the team is more important. It has got double importance as compared to your technical skills. And this is the criteria on which mostly employers judge you when you go for your interview. So if somebody doesn't have any interpersonal skill, or if the students are here still undergraduates, then I must emphasize that you must develop these skills along with your technical skills. So these are the few core practical skills just for the beginners, for the newcomers, and also for our final year students who are just to give the case records to the teachers. So your core practical skills are: number one, signalment. Signalment means that you are aware of the species, age, breed, and sex of the animal. This is a skill. And for the first year students, if you happen to come in outdoor clinics, just stand by the animal and record these 4 points. So if the more you are well versed with the species, breed, age, and sex, this is the first step of your core practical skills. Then are your observational skills, and your observational skills goes with this with your sight of seeing, sense of seeing or sense of sight. Then are the palpation skills. Palpation skills go with your sense of feeling, touch. Then are the auscultation skills, and these skills go with the sense of hearing. So basically, we have 5 senses. You are using your 4 skills or 4 senses all the time. You are using your 4 senses all the time, and all of these, signalment, observation, palpation, and auscultation, are all the core practical skills. Because the more you go uh, uh, for your clinics, the more you apply these skills or these 4 senses in your clinics, the more good you will be at dealing with the animals. Of course, taste is the sense that we mostly don't apply in the clinics, but these are the 4 senses. So, with the animals, or working in the clinics, or working in the community, you are using your 4 senses all the time. So for the new beginners, for the first year students, I must say that you are not still doing any clinical work, or you are not assigned to do any clinical work. But if you would like to become a good practitioner, just enhance those 4 senses. Time to time, come in the clinics,
And if your club can arrange some trainings for those newcomers, these are actually the senses that you need to sharpen yourself, like signalment, observation skill, palpation skill, auscultation skill. So these are the core practical skills. And these go a long way actually for the most experienced veterinarian as well. Everybody, every veterinarian is using these four senses. In the last, I would just suggest that this should be the code of conduct for each one of us, including myself as well. So I would request Junaid to get this or have this code of conduct as one of the important document whenever you are making your new members, or whenever you are making your new cabinet. Everybody must read and must sign that, so that everybody must know that we are working for the welfare of animal, we are working for the welfare of profession, we are working for the welfare of clients. सो वेटनेरियन किसी ज़माने में 1-to-1 केसेस को डील किया करते थे, बट नाउ द वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड. नाउ द वेटनेरियन इज गिविंग देयर इनपुट्स टू द पॉलिसी मेकर्स. नाउ द वेटनेरियंस आर गिविंग देयर इनपुट्स टू ऑल द स्टेक होल्डर्स. और मैं तो बल्कि यहाँ तक कहती हूँ कि इफ़ यू आर अ हार्ड वर्किंग वेटनेरियन एंड इफ़ यू know your work and if you are learning a lot from your profession, you don't need to go abroad. You can work over here, you can start your own business, you can start your own work. And there are a lot of opportunities in Pakistan as well where you can explore yourself. The thing is that you need to fulfill the demands of the profession, and that is important. And they are not very impossible things to meet. They are very simple things, but these are the demands. And if you want to be a successful veterinarian, you must fulfill these demands, and you must be aware of what is happening in the market, and you must be having this code of conduct in the back of your mind. Thank you so much. अगर आपको अंदाज़ा हो कि शुरू शुरू में जब वेटनेरियंस जाया करते थे बाहर फील्ड में, तो उनको भी यही कुछ ऐसा हमारे सोसाइटी में लोग सोचते हैं कि वेटनेरियंस को दे लुक डाउन ऑन देम. बट अगर हमें अपने प्रोफेशन में इज्जत खुद पैदा करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड टू बी अ वेटनेरियन. और अगर आप दूसरे प्रोफेशंस को देखें, जैसे मेडिकल डॉक्टर्स को देखें, या आप फार्मेसी में जितने लोग काम करते हैं, आपको मेडिकल डॉक्टर्स रोजाना नजर आते हैं सड़कों के ऊपर जुलूस निकालते हैं. वेटनेरियंस को आपने नहीं देखा, वेटनेरियंस को कभी आपने ये जुलूस निकालते हुए नहीं देखा कि हमारी तनख्वाहें कम है या हमें कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं. वेटनेरियंस आर माशाल्लाह डूइंग वेरी गुड एवरीवेयर. जहां तक सोसाइटी का ताल्लुक है, सो मैं इससे थोड़ा सा इख्तलाफ अब इसलिए करूंगी क्योंकि अभी आपने देखा कि 15 से ज्यादा वेटनरी के इंस्टीट्यूशंस पूरे पाकिस्तान में ऑपरेटेड हैं, काम कर रहे हैं. और हमारा माशाल्लाह वेटनरी का जो मेरिट है वो एमबीबीएस के बाद आता है या फार्मेसी के बाद आता है. आप देखें कि आपका स्कोप कितना ज्यादा है, आपके प्रोफेशन में स्कोप कितना है. मेडिकल डॉक्टर्स हैं, उनका इतना स्कोप नहीं है. आपके जो आगे ट्रैक्स आप ले सकते हैं या पाथ्स आप ले सकते हैं, उनमें वैरायटी देखें कितनी है. इट इज अप टू अस एक्चुअली. हमें सोचना चाहिए, हमें उन पाथ्स को लेके, उन डिमांड्स को लेके अपने आप को अकॉर्डिंगली तैयार करना चाहिए. बाकी मैं नहीं समझती हूँ कि माशरे में एक वेटनेरियन की इज्जत नहीं है. एक ऐसा वेटनेरियन जो कि अपने क्लाइंट केयर को जहन में रखता है, अपने एनिमल्स को वो सही तरह से ट्रीट करता है, अपने आप को हमेशा अप टू डेट अपनी नॉलेज को रखता है. मैंने खुद देखा है ऐसे वेटनेरियंस को जिनके लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप उनके कस्टमर्स के साथ होते हैं और बहुत इज्जत मिलती है.
اور پھر ویسے بھی ہمارا جو پروفیشن ہے، ہم جن اینیملس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں وہ بے زبان ہے. سو ہم نے بڑا نوبل پروفیشن لیا ہے. یہ ضرور ہے کہ یہاں پہ ہمارے سوسائٹی میں ایک سوچ ہے کہ سب سے پہلے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کو میڈیکل میں جانا ہے، یا آپ کو ڈاکٹر بننا ہے، یا آپ کو اور کسی پوسٹ میں جانا ہے، صرف اس لیے کہ اویئرنیس نہیں ہے. اور وہ اویئرنیس ہم نے لے کے خود آنی ہے. ہم نے خود بتانا ہے کہ ہمارا جو ویٹنری پروفیشن ہے. اب آپ کے یہاں پہ دیکھیں آج کل ایڈمیشنز ہو رہے ہیں، بہت سے بچوں نے اپلائی کیا ایڈمیشنز کے لیے، اور صرف ویٹنری یونیورسٹی میں ہی نہیں، ایرڈ میں بھی کیا ہے، باقی انسٹیٹیوشنز میں بھی کرتے ہیں. اور یہ 15 انسٹیٹیوشنز کیوں بن گئے؟ اس لیے بن گئے بیکاز دیر از اے ڈیمانڈ. there is a demand of veterinarian in our society. مختلف جگہوں کے اوپر ویٹنیرینس کی ڈیمانڈ ہے. اس ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے، اس اویئرنیس کو دیکھتے ہوئے یہ 15 سے زیادہ انسٹیٹیوشن بن گئے اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی بن رہے ہیں. سو آپ کو اپنی، سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اپنی عزت خود کریں. بینگ اے ویٹنیرین یو شوڈ فیل پراؤڈ آف یور سیلف. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس جتنا اسکوپ ہے آپ کے ویٹنری پروفیشن میں، اتنا میں نہیں سمجھتی ہوں کہ کسی اور پروفیشن میں اتنا اسکوپ ہے جتنا ایک ویٹنیرین کے کر سکتا ہے. یو کین پالش یور سیلف. آپ MBA کر لیں، آپ کمیونیکیشن میں چلے جائیں، آپ اپنی ڈگریز کو انہینس کر لیں، بٹ آپ کی اگر بیسک ڈگری ویٹنیرین کی ہوگی، یو کین ڈو ونڈرز. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. جی So I agree, beta. What we can do with ourselves, because we are sitting here at the platform of Vet Scare. So Kristen, sorry. So I would request office bearers of this club to arrange those meetings or those discussion groups from time to time, so that we can talk about these problems. These are not technical problems, but these are the problems that are affecting the mental health of our veterinarians. So if something is bothering our minds, or something is not good as we think of it, so we must talk about it. So it is very important. We must talk about these things. I agree that there must be a counselor at the university level who must be speaking with the students, but actually it is the system. We have a mentor system, or that was actually unfortunately made for these things, but that is not working as per the requirements, I must say. But we should not actually look up to the others. We have our own platform here, so we can talk about. I am there with you. You can discuss these things. We can discuss these things between our own groups, and it is actually us who can change, who can bring a change. And it is actually you people, you are the young leaders. It is actually your also um, a role as well in the society, to bring some goodness, to bring some nice things. If your fellow students are thinking like this, or your fellow students are listening to the things that are very unpleasant for a veterinarian, do talk about it. Do give some consultation to them, so that they are out of the stresses. And this is one of the demand actually of your profession, that you must be physically and psychologically fit. This is a demand. And if there is some problem somewhere, if there is some psychological some problem somewhere among the veterinarians, and you think that it is growing among the veterinarians, then do talk about it, so that we can deal it, we can heal all those worries that are faced by you people. Rather than to stay silent, we should talk about it.